हाय गाइस, मेरा नाम विशाल। मेरे साथ मेरे दोस्त हैं अभी जेरी। अभी हम फिर जुड़े हैं अपने चैनल में जिसका नाम है सिंपली जेवीआर। आज का टॉपिक है यूएस ने वॉर्न किया है ईरान को रिगार्डिंग बॉम्बिंग एंड ऑल। मेरे को भी एग्जैक्टली पता नहीं है कि वहाँ पे हुआ क्या है और वहाँ पे चल क्या रहा है। अभी वीडियो देखेंगे तो हमें आइडिया लगेगा कि एक्चुअली में हुआ क्या है, किसने किसको वॉर्न किया और क्या इशू चल रहा है, क्या टेंशन है। बट अभी यहाँ पे टेंशन चल रही है ईरान साइड में। जेरी भाई देखें एक्चुअल में हो क्या रहा है। बिल्कुल बिल्कुल भाई बिल्कुल। और मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, हियर वी गो। Hello, and welcome to Firstpost America. I'm Eric Ham, coming to you from the heart of the nation's capital in Washington, D.C. We'll get you a roundup of stories from across the world, but first, let's take a look at the headlines. Tehran says it won't hesitate to respond to U.S. attacks on its territory after Washington declined to rule out strikes on Iran and vowed retaliation against Iran-backed groups. We begin with the latest from the Middle East, where tensions continue to simmer. U.S. Secretary of State Antony Blinken is in Saudi Arabia. He will also head to Egypt, Qatar, and, of course, Israel and the West Bank. The talks will focus on the Gaza hostage crisis and a ceasefire, which was later extended. As Israel continues to escalate its offensive against Hamas, according to reports, a ceasefire proposal under discussion would pause fighting for an initial 6 weeks, as Hamas frees अच्छा। hostages in exchange for Palestinian prisoners. In November of last year, Israel and Hamas agreed to a 4-day ceasefire, which was extended to a week, a breakthrough that अच्छा। facilitated the release of dozens of hostages. This is Blinken's 5th visit to the region since October of last year when the conflict began. The latest visit comes as the U.S. launched strikes against 85 Iran-linked targets in Iraq and Syria. It marked the first time the U.S. has carried out strikes in both countries simultaneously. Washington says it hit command and control centers, intelligence centers, rocket missile and drone storage facilities of Iran-backed militias. The United States and Britain also unleashed attacks against 36 Houthi targets in Yemen. British Prime Minister Rishi Sunak said the strikes were in self-defense. Well, since the last set of strikes, we've seen the Houthis continue to attack shipping in the Red Sea. That's obviously unacceptable. It's illegal. It puts innocent people's lives at risk and has economic consequences. Now, that includes attacks, by the way, on British-linked vessels, and that's why we've acted again in self-defense in a proportionate way and together with our allies. I've been clear that I won't hesitate to protect British lives, British interests, and our diplomatic efforts are focused on bringing de-escalation and stability back to the region. This is the People who are working in shipping would know कि मतलब एक्चुअल में काफ़ी ज़्यादा डिले आ रहा है अभी, हाँ। हाँ। सिंस इसराइल में अभी ये दिक्कत चल रही है, रेड सी में जो जो भी भी चल रहा है जो भी ट्रांसपोर्ट हो रहा है रेड सी से उसमें अटैक। बहुत डिले आ रहा है। हाँ, क्योंकि अभी हम्म। उसको रीराउट करके अफ्रीका के नीचे हाँ। से घुमा के ले जाने की जिस बात हो रही है। और वहां पे भी टेंशन ये है कि वहां पे वो सोमाली। सोमालिया है। हाँ, हाँ। सोमाली है। तो वो वो भी है, उसको डिले है शिप्स को हाईजैक कर रहे हैं। शिप्स को हाईजैक कर रहे हैं। हम्म। तो अभी चीजों में डिले तुमने है आई अभी थिंक तो। वो वीडियो भी डाली थी राइट, जिसमें इंडियन नेवी ने यस। हेल्प किया था हाँ। टू गेट हाँ। बैक हाँ। दोस आइटम्स, हाँ। कार्गोज यस। वगैरह जो इन्होंने हाईजैक किया था वो वापस मिलने के लिए उन्होंने हेल्प यस। किया। यस। यस। second wave of assaults aimed at disabling the Iran-backed group and the latest escalation in the conflict that is spreading across the Middle East. White House National Security Advisor Jake Sullivan said U.S. strikes on Iran-backed militias were just the beginning of its response. Sullivan also refused to rule out strikes on Iranian soil. Of our response. There will be more steps. Some of those steps will be seen, some may not be seen, but there will be more action taken to respond to the tragic death of the 3 brave U.S. service members. And we cannot rule out that there will be further attacks from Iranian-backed militias in Iraq and Syria or from the Houthis. We have to be clear-eyed about that. The president, in being clear-eyed about that, has told his military commanders that they need to be positioned to respond to further attacks as well. And I would just say, from the perspective of Tehran, if they chose to respond directly to the United States, they would be met with
a swift and forceful response from us. Washington strikes are in retaliation for the killing of 3 U.S. soldiers in a drone attack at a U.S. base in Jordan last week. Iran has warned the United States against any move against its ship Bayshad, which is stationed in the Red Sea. Washington suspects the Iranian-flagged ship of providing surveillance information to help direct Houthi attacks on ships in the Red Sea. And the latest, telecom firms linked to the UN-recognized government in Yemen said they fear Houthi rebels are planning to sabotage a network of submarine cables in the Red Sea. These cables are critical to the functioning of the internet in the West and the transmission of financial data. The Red Sea carries about 17% of the world's internet traffic along fiber pipes. While the Israeli-Hamas war rages, the largest strategic conflict in the Middle East pits Iran against the United States. Washington is trying to press Tehran into reining in its proxies, and Tehran is aiding those forces to put pressure on the U.S. to leave the region. But neither side, the United States nor Iran, wants a direct conflict. नहीं होना चाहिए यार। ये जितनी जल्दी रुक जाए ना कॉन्फ्लिक्ट, उतना ज्यादा अच्छा रहेगा अच्छा रहेगा, पूरे हाँ। वर्ल्ड के लिए। हाँ, क्योंकि अभी ये अमेरिका वो पूरा रीजन जो मिडिल ईस्ट का, वहां पे बॉम्बिंग स्टार्ट कर रहा है। ईरान, इराक, लेबनान, सीरिया का, उसके बाद हूथीज के ऊपर, वो तो लेबनान के पास है। हमास पे वहां से इजराइल अटैक कर रहा है, तो ये पूरा मिडिल ईस्ट का एरिया पूरा वो बहुत उसके बुरा हाल अंदर है। जो भी सिविलियंस है वो भी इफेक्ट हो रहे हैं, राइट? मेन वो है, मेन सिविलियंस इफेक्ट हो रहे हैं, और इसकी वजह से ना पूरा वर्ल्ड इम्पैक्ट होता है। क्योंकि अब जैसे हुतीज ने अभी बोला है कि हम इंटरनेट कनेक्टिविटी को तोड़ देंगे जो जा रहा है वहां से, तो वो बहुत बड़ा, मतलब पूरे वर्ल्ड में इम्पैक्ट करेगा। बहुत लॉस हो जाएगा, पूरे वर्ल्ड में बहुत लॉस होगा। इट इज नॉट जस्ट अमेरिका को लॉस होगा या जस्ट ब्रिटेन को लॉस होगा, इसका पूरे वर्ल्ड में इम्पैक्ट आएगा। पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी गिर जाएगी, लोगों का लाखों का अमाउंट चला जाएगा, और जो सिविलियंस हैं वहां के, वो तो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होंगे। रुक जाना चाहिए। अभी अगर इनका सीज फायर था बीच में, तो उसको सीज फायर को कंटिन्यू करे। जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको टेबल पे बैठ के रिजॉल्व करना चाहिए रिजॉल्व इनको, करना चाहिए, राइट? इसराइल को। हाँ, इसराइल को। अगर इन्होंने हमास ने इनके लोग पकड़े हुए हैं जो बंदी बनाए हुए हैं, हमास को अब छोड़ देना चाहिए उनको यार। क्यों इतना पंगे लेना, क्यों इतने फसाद में पड़ना। बट अभी और कुछ तो कर नहीं सकते, अब देखो क्या ही होता है, हमारे हाथ में तो है नहीं। अभी के लिए इतना ही। इतना ही करते हैं यार। आगे, हाँ, आगे कोई अपडेट आएगा इसमें, कुछ भी होता है, कोई अटैक होता है या फिर हमारे पास कोई अपडेट आती है, तो हम आप तक शेयर करेंगे। इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। अगेन, दिस इज फ्रॉम पलकी शर्मा। थैंक यू एंड गुड बाय। गुड बाय गाइस, बाय बाय।